Hello friends and welcome again. In the last session we have seen the introduction of Songs of the Open Road. Today what we are going to begin is describing the poem line wise in detail. So I'll begin the poem. Songs of the Open Road by Walt Whitman. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Now, in this first para of the poem, the poet Walt Whitman is describing. What he is describing is, afoot and light-hearted, I take to the open road. He is saying that I go on to a journey. I am beginning with a new journey. Afoot and light-hearted, with nothing in my heart and nothing in my brain. Yes? I want to explore new things. Yes? Very light-heartedly, very casually, I want to take this ओपन रोड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे एक जर्नी बिगिन करनी है और दिल में कुछ भी नहीं रखना है. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे एक्सप्लोर करना है. हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी. यस, हाउ इज़ द वर्ल्ड बिफोर मी? हाउ इज़ वॉल्ट विटमैन डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड? हेल्दी एंड वेरी फ्री. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग wherever I choose. How is the muddy part? Yes, it is just going long and long ago, long and long. And brown path. How is the long road? It is described as long brown path. जब हम गार्डन वगैरह में से गुजरते हैं, जंगल में से गुजरते हैं, तो आप देखते हो मिट्टी का ऐसा रास्ता बना रहता है. आपण ज्याला पाऊल वाट म्हणतो तशी. लीडिंग बिफोर मी, मेरे सामने एक रास्ता है, एक रास्ता बना हुआ है जो मैंने चूज़ किया है. मुझे उस पर चलना है. मुझे एक जर्नी बिगेन करनी है. अब शुरुआत से जो डिस्क्राइब किया हुआ है पोएट ने, वो ये है कि मुझे एक जर्नी बिगेन करनी है. मेरे दिल में कोई मलाल वगैरह नहीं रखना है. एक प्लेन हार्ट से मुझे अपनी एक जर्नी शुरू करनी है और ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है. ये दुनिया को मुझे एक्सप्लोर करना है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है. मुझे लोगों से मिलना है. एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जाना है. एक फ्री हेल्दी एटमॉस्फेयर में मुझे जीना है, जाना है, एक्सप्लोर करना है. एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय दैट मूवमेंट. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग wherever I go and wherever I choose. I want to live a very liberal, a very free life. Yes, wherever I could go, I am just very open-hearted and very liberal. Yes, without any tensions and without any burdens. Now in the second para, henceforth I ask not good fortune. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट एनी गुड फॉर्च्यून विथ मी. लेट ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑल द गुड विशेस कम अलॉन्ग विथ मी. आई है तो डिफिकल्टी भी आने दो, कोई हेल्प आ रही है तो वो भी आने दो. आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी फेवर फॉर माई जर्नी. यस, I ask not good fortune. I myself am good fortune. Now here he is just showing his confidence that whatsoever difficulty would come, I am able to face it. Let it come. I'll see what happens. Yes, कोई भी डिफ़िकल्टी अगर सामने आ रही है तो वॉल्ट विटमैन क्या बोल रहे हैं, उसे आने दो, मैं खुद फेस करूँगा. मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीवन्स फेवर ओवर हियर. आई वांट टू मीट दैट जर्नी बाय माई सेल्फ. यस,
whether it would be of good fortune or not. That will be my destiny, not anyone else. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Yes, what here the poet is describing, that okay, yes, I am by myself, I am capable of making myself. Yes, मैं खुद को खड़ा कर सकता हूँ, खुद को बना सकता हूँ. I have that capabilities, I have that caliber to fight for myself. Yes, मैं खुद अपने लिए गुड फॉर्च्यून बना सकता हूँ. Henceforth, I whimper no more. Whimper यानी यहाँ पे हम complaints बोलेंगे, जो crying या complaining all the time. No, I don't want to whimper anymore. Postpone no more. Need nothing. Yes, what I don't need anything. Here Walt Whitman is explaining, I want to begin with a journey, but without any expectations, without anybody's help. Henceforth, I whimper. Whimper का meaning यहाँ पे है complaining और no more sadness. I don't want to complain. No any issues. Postpone no more. Postpone यानी टालना. मुझे टालना नहीं है. जो डिफ़िकल्टी आ रही है उससे भागना नहीं है. I want to face it and need nothing. And I am not expecting anything from anyone. Now, done with indoor complaints. Done with indoor complaints, libraries and querulous criticism. Now, in this line, here the poet is saying, lots of complaints are done with me. Too much complaints are done with me. Now I am not going to stop. Yes? Querulous means over here complaining or constant complaining and irritating. Yes? Too much irritation is there. Complaining showing that one is irritated. हम बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की कभी एक आधी चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है. Isn't it? Querulous. So querulous means too much of complaints that make someone irritated. Yes? Irritation होती है हमें उस चीज़ों से. हम बोलते नहीं, I don't want to discuss anymore. इस चीज़ को लेके हम, इसका मीनिंग है querulous. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Yes, the poet is saying, the poet Walt Whitman here is saying that okay, I'm done with it. I'm done with all these complaints and all this viewpoints and all this irritation. I don't want to handle it much more. Strong and content. Content here means satisfied. I am very much satisfied with what I have. I travel the open road. The earth is sufficient. That is sufficient. Now, strong and content. I am over to that above line. In the above line, done with indoor complaint, libraries, querulous criticism. Yes, all is done with me. The poet is saying that okay, I am fed up with it. I am done with it. I don't want to go continue with all these kinds of works which would make me irritate. I am above all that now. I want to go all alone on that open space road. I want to travel. I want to explore. Whether good or bad, I want to explore. I want to get new experience of people, about places. Strong and content. I am now very much strong in build, very much strong. My willpower is very strong and I have taken my own decision and I am very satisfied with it. No second thought for that. I travel the open road, the earth that is sufficient. Yes, the earth is too big. I want to travel it, and it is not going to end. My decision is not going to change. मेरा decision नहीं बदलने वाला है. मैं इस
जो अर्थ है उसका भ्रमण करना चाहता हूँ या उसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू फाइंड न्यू प्लेसेस, आई वॉन्ट टू ट्रैवल. यस, आई वॉन्ट सर्टन चेंज. हम भी हमेशा हमेशा एक ही जगह पे रह के बोर हो जाते हैं, तो चलो घर से थोड़ा सा बाहर मार्केट को चले जाते हैं, या किसी कभी समर हॉलीडेज़ में हम छुट्टियों में किसी फैमिली मेम्बर के पास या किसी हिल स्टेशन जाते हैं फॉर अ चेंज. एक दिन का ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चेंज वी गो. यस, thus the poet is also here describing that okay, I am fed up with all this kind of materialistic thing, now I want to live for myself. मुझे मेरे लिए जीना है, and I am very strong with my decision. I have put forth each and every point that I want to explore new things now. I want to take out the time for myself, and I want to begin with a new journey on the open road which is standing in front of me, which is leading in front of me. Got it? In the next session we would continue our poem.